let f of x equal to this thing, f of a equal to 0, and limit x tends to infinity of f of x, okay, equal to pi by 6, then a is ओके कूल. सो पहले तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, एक काम करो, x इक्वल टू ए टी बोल दो. सो दिस इज लाइक ए इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए पावर 4 कॉमन, सो टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, राइट. सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे जाके 1 अपॉन ए टी टी. डज दैट मेक सेंस? होपफुली इट डज. और फिर अपने को इसको इंटीग्रेट करना है. सो हाउ डू यू इंटीग्रेट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी डिवाइड बाय लेट्स से टी स्क्वायर. दिस शुड बी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा. उसमें लिखूंगा टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2, और फिर बचा हुआ जो 1 रहेगा दैट इज़ प्लस 1, राइट. होपफुली दैट मेक्स सेंस. टी टी. सो इसका जो इंटीग्रेशन इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज जस्ट 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. सो या this is plus 3 or more like square root 3 square. So you know it's just yeah, let's just say t minus 1 upon t equal to tan theta. I should say square root 3 tan theta, right? So this will be like 3 sec square theta हो जाएगा, like integration of 3 secant square theta. यहाँ पे आ जाएगा square root 3 sec square theta एंड डी थीटा समथिंग लाइक दैट. और ये सब कैंसिल होके बेसिकली आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू थीटा विच इज़ जस्ट टैन इनवर्स ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी अपॉन स्क्वायर रूट 3. बट अब अपन टी को पुट कर सकते हैं. सो अपन ने एक्स इक्वल टू ए टी पुट किया, सो टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए. इसको एक्स अपॉन ए पुट करेंगे, यू विल जस्ट गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, सो सिर्फ ए की ए टाइम्स एक्स आएगा आई गेस. Yeah, makes sense. A times x. So square root 3ax like this. Okay. And polar f of a is 0. Okay, plus c, right? एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन होना चाहिए. सो एफ ऑफ ए इज 0. जब इसमें ए पुट करेंगे क्या, लाइक ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी. सो सी शुड बी इक्वल टू 0. ओके. एंड द लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज पाई बाई 6. सो एज x टेंस टू इन्फिनिटी ये चीज़ क्या अप्रोच कर रहा है? This approaches infinity, of course, positive infinity, and right. This is weird. As x tends to infinity, this does approach infinity, I guess so. Okay. कुछ तो मैंने इससे मिस कर दिया क्या? Plus some constant, right? But did I just miss something? I think I did. Right. यहाँ पे ये 1 अपॉन ए मैंने वो मिस कर दिया. राइट. यहाँ पे 1 अपॉन ए लाइक ए स्क्वायर रूट 3. दैट मेक्स सेंस. सो जब जैसे जैसे ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, जस्ट tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विच इज पाई बाई 2. सो पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर रूट 3, दैट थिंग इज पाई बाई 6. सो यहाँ से अपने को मिल रहा है ये 3. सो दिस इज स्क्वायर रूट 3. सो ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. ओके. नेक्स्ट इक्वेशन. Next question. If n1 n2 are positive integers, then this thing is a real number if and only if positive integers 1 plus I की पावर n 1 plus I cube and I पावर 5. तो ये निगेटिव अल्टरनेट हो रहा है. ओके. And it's a real number. Positive integers. This is complicated. ठीक है. सो टॉक अबाउट 1 प्लस आई. 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या होता है? दैट्स जस्ट 1 माइनस 1 प्लस 2i विच इज़ बेसिकली 2i, राइट? सो फाइन. सो 1 प्लस आई की पावर
4, that will be -4. This should make sense, right? Yeah, I think that's right. So 1 plus I की power 4, this is that. And then what about 1 minus I? 1 minus I का square क्या होता है? That's negative 2i. So it also has 1 minus I की power 4 equal to this -4 stuff. So that's nice. Okay. So n1, then you got n2. Think about this. ओके तो यहाँ पे n1 है, यहाँ पे भी n1 है, यहाँ पे भी n2 है, यहाँ पे भी n2 है. आई डोंट नो, ये थोड़ा अजीब है ना. ओह वेट, ये उस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम है. राइट, दैट मेक्स सेंस. दिस इज बाइनोमियल थ्योरम. होल थिंग इज कि you can write this as 1 plus I to the power of n1 plus 1 minus I to the power of n1, okay, plus 1 minus I to the power of n2 plus 1 plus I to the power of n2, and then group this. So ये चीज़ we know is only going to give us all the even things, if that makes sense, जो कि ऑब्वियसली रियल होगी. एंड ये चीज़ भी अपने को सारी रियल चीज़ें ही देगा ना बेसिकली. सो लाइक कोई भी चीज़ रख दो, ये हमेशा काम करेगा. व्हाट्स द बिग डील? या लाइक 0 से स्टार्ट होगा, 0 रहेगा, फिर बाद में जो और ओ नो सारे इवन पावर्स बचेंगे, विच इज़ ओके, क्योंकि इवन पावर्स तो अपने को -1 में कन्वर्ट करते आएंगे एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो अगर सारे ऑड आई के पावर्स कटने ही वाले हैं तो वाई बॉदर? दिस इज ऑलवेज अ रियल नंबर. व्हाट्स द डील विद इट, राइट? क्योंकि ये n2 ये n2 है. इफ एंड ओनली इफ नन ऑफ दीज, ये हमेशा रहेगा ना. n1 इक्वल टू n2 प्लस 1. व्हाट? वाई? लाइक आई डोंट गेट इट. यहाँ पे एक माइनस आएगा, फिर वहाँ पे एक और माइनस आएगा, सो दैट इज प्लस, और फिर ये माइनस. ये परफेक्टली ग्रुप्ड है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई. Whatever. Next question. If y equal to f of x is continuous function such that its graph passes through a comma 0, then limit x tends to a of log base e, मतलब natural log of 1 plus all of this stuff. Okay. It's a continuous function such that its graph passes through a comma 0. So what you know is that f of a is 0. Okay, and what is natural log of 1 plus 3f upon 2f basically as x approaches a? As x approaches a, this thing approaches 0 and this thing also approaches 0. So maybe तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि limit as y approaches 0 of, well, natural log of 1 plus 3y upon 2y, right? That's what it is. So एक काम करो, 3y से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब या लाइक यहाँ पे 3 रख दो, तो दिस इज गोना बी 3/2, राइट? ये सेम ही चीज़ है. एंड लुक एट दिस थिंग, इट जस्ट अप्रोचेस 1, सो 3/2 इज द लिमिट. नो बिग डील. नेक्स्ट क्वेश्चन. द vector equation of a line through the point A which is parallel to the plane, okay, and intersect the line r vector equal to c vector plus equation of a line through the point A, और इसको इंटरसेक्ट करता है. ओके, और डी वेक्टर का इसमें क्या रोल है आखिर? आई डोंट नो. इसको बस इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन चाहिए. आई डोंट गेट इट कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि
अच्छा एक बात बताओ, टू इट इज़ पैरेलल टू दिस प्लेन अपने को चाहिए, सो इसका जो भी वेक्टर, मतलब जनरल तुम्हारा लाइन का वेक्टर कैसा रहता है, आर वेक्टर इक्वल टू, मतलब यही फॉर्मेट है ना बेसिकली। सो ए वेक्टर प्लस, क्योंकि वो ए से पास होनी चाहिए, प्लस लेट्स जस्ट से लैम्डा टाइम्स आई डोंट नो कुछ तो वी वेक्टर, राइट। ये तुम्हारी सपोज लाइन है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। इसका मतलब है कि जो वी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। या that's what it means. Okay, cool. And it also intersects this guy. Okay, weird. It also intersects this guy. I don't know. कब होगा कि ये इस इंसान को इंटरसेक्ट करने लगे? Like for some value of lambda, what you should have is like a vector plus lambda v vector equal to c vector plus something d vector. तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि a वेक्टर माइनस c वेक्टर इज कोप्लेनर टू v वेक्टर एंड d वेक्टर, राइट। सो इट्स नाइस, दैट जस्ट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ come on, think about it, just coplanar to that, that's all it really means. So determinant of a vector c minus c vector and v vector and d vector, this thing just is zero. Okay, आई डोंट नो इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए नहीं। सो मोर लाइक, और तो पता है कि डॉट डी वेक्टर में इसका कोई तो भी पार्टिसिपेशन है, बी वेक्टर से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। Come on bro, think about it. इसको अगर मैं बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि अपने कुछ देगा, क्योंकि ये चीज़ लाइक है क्या एग्जैक्टली ये सिर्फ एक बॉक्स है और लैम्बडा से पर, ये तो लाइक वेक्टर भी नहीं है। व्हाट इज़ दिस थिंग? सो ये तो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एंड व्हाट इज़ दिस गाय? ओके, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ये एक वेक्टर रहेगा विच माइट वर्क, दिस माइट ऑल्सो वर्क, ये चीज़ तो काम नहीं करेगी। अच्छा, और ये सी माइनस ए से परपेंडिकुलर है, फाइन। ओके, सो अगर वी वेक्टर सी माइनस ए से परपेंडिकुलर है, हाउ डज दैट, व्हाट? ओके ठीक है, परपेंडिकुलर है तो क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या उससे? आई डोंट नो मैन। और फिर ये चीज़, तो ये चीज़ बी और डी इन दोनों के प्लेन में है, और अपने को वी जो है वो बी से परपेंडिकुलर चाहिए, सो बी और डी के प्लेन में नहीं होनी चाहिए ये चीज़। और ये जो चीज़ है ये सी माइनस ए और डी के प्लेन में है एंड ये बी से परपेंडिकुलर है, सो या प्रोबेबली ये एक सही चीज़ है। सो ये मैच कर सकता है। तो ये चीज़ क्या है, ये बी से परपेंडिकुलर है, सो दैट मीन्स दैट गोज इन द प्लेन, मतलब पैरेलल टू प्लेन, वो करेक्ट है। और ये सी माइनस ए और डी के प्लेन में है। ओह दैट्स नाइस। अगर ये सी माइनस, राइट 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 राइट, अगर ये सी माइनस ए और डी के प्लेन में है तो ये डिटरमिनेंट अपने आप जीरो हो जाएगा। सो और वही अपने को बेसिकली चाहिए था, विच मीन्स दिस इज गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस थिंग and f of sine inverse of sine 8 equal to alpha, alpha is a constant, then f of tan inverse of tan 8 is okay. तो अपन अल्फा ढूंढ सकते हैं, राइट। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, व्हाट विल दैट बी? 8 यानी लाइक
3.14 का डबल 6.14, उसका हाफ क्या होता है? ठीक है, whatever. 6.14 इज 2 पाई, एंड अगर मैं वापस ऐड करूँ तो लाइक 3 पाई, दैट विल बी 9 पॉइंट समथिंग. ओके, नॉट गुड. 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होगा? दैट विल बी 6.14 नहीं, 3.14 का डबल यानी कि 6.28, and then that's like this plus something like 1.57, right? This plus 1.57, that's gonna give us, this is like 7, so 8, 5.7. so ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा है, that's what you are saying. तो बेसिकली ये सेकंड क्वाड्रेंट का है कोई, तो ये एक नंबर है. एंड ओके, sine inverse of sine of that, well that's just 2 pi, which is basically 5 pi by 2. Yeah, so 5 pi by 2 minus 8, f of that thing is alpha, right? And tan inverse of tan 8, that's not that, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा. so f of 8 minus 5 pi by 2, that's what that is. that is equal to something. अब ये जो पूरा है, ये पार्ट पूरा ऑड रहेगा, right? so this is like 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1. अगर तुम समझ रहे हो अल्फ़ा माइनस 1 क्या है, तो ये पार्ट है पूरा. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, राइट? क्योंकि वो ऑड है ना, इतना पूरा पार्ट. सो दैट विल बी 2 माइनस अल्फ़ा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ दिस इंटीग्रेशन इज c माइनस हाफ एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, जस्ट वेट अ सेकेंड. हाँ, सॉरी, कहाँ पे थे हम? इफ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस नेचुरल लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स. तो बेसिकली पार्शल फ्रैक्शंस कर सकते हैं हम यहाँ पे, राइट? दिस विल बी नेचुरल लॉग, वो सब तो रहेगा ही, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. ओके, नहीं, वेट, ओह ओके, आई गेट इट. दिस थिंग टाइम्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. नाउ लुक एट दैट, राइट? इसका डेरिवेटिव यही है ना बेसिकली, मतलब निगेटिव विथ दैट. या, दैट मेक्स सेंस. नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड स्टफ, और फिर यहाँ पे जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. सो या, कूल. जस्ट दिस थिंग स्क्वायर्ड, नेगेटिव ऑफ कोर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट. सो negative half of f squared x. f is natural log of 1 plus x upon x. That is f of x. So limit as x tends to infinity, तो ये चीज़ तो 1 अप्रोच कर जाएगी of f of x. That's just 0. Next question. If alpha and beta are the eccentric angles of the extremities of a focal chord of standard ellipse, focal chord, okay, then the eccentricity of the ellipse is, of the focal chords. Just think about it. Basically जो focal chords है वो like क्या, तुमने जो ए ई वाले पॉइंट्स है वहाँ पे ऑर्डिनेट्स बनाए, और इनके इसेंट्रिक एंगल्स अल्फा, मतलब कि अगर मैं इसको वापस सर्कल में कन्वर्ट करूँ स्ट्रेच करके, ये जो कॉर्ड है ये बेसिकली बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, और ये जो एंगल्स रहेगी ये अल्फा और बीटा रहेगा, राइट? ये बीटा नहीं रहेगा, सॉरी. सो ये अल्फ़ा रहेगा, एंड देन दिस कंप्लीट थिंग, ये पूरी चीज़ बीटा रहेगी, राइट? वी नो लाइक बीटा इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा प्लस, या लाइक दैट स्टफ. कूल. हाँ, राइट? डजंट दैट मेक सेंस कि बीटा पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा रहेगा, फिर पाई प्लस, मतलब ये एक इसेंट्रिक एंगल तो रहेगा ही ऑफ अ फोकल कॉर्ड. वेल दैट्स डिफरेंट. तो बेसिकली अब ये चीज़ मतलब नेगेटिव अल्फा बट प्लस 2 पाई, सो दिस इज डिफरेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक ही सिंगल फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं. ओह वेट, फोकल कॉर्ड, ओह शिट, नो,
not a focal ordinate. This is different. तो तुम्हारा लाइक ए ई वाला पॉइंट कहीं तो यहाँ पर रहेगा, और कोई भी रैंडम कॉर्ड लो, कोई भी रैंडम, और फिर ये जो है वो अल्फ़ा बीटा है, लाइक ये अल्फ़ा है, ये पूरा का पूरा बीटा है, राइट. दिस कंप्लीट थिंग इज बीटा. सो यू कैन से काइंड ऑफ लाइक beta minus alpha, that just gives you this complete thing. So 2 pi minus beta minus alpha, that is the angle subtended by this chord on center. Okay, cool, that makes sense. And this thing is AE, you know that. Okay, और अपने को इसेंट्रिसिटी ढूंढनी है, इसेंट्रिसिटी फ्रॉम दैट. This is weird. You know लेंथ कैसे चेंज होती है अपने को पता है, बट स्टिल थोड़ा अजीब तो है ये. यू कैन जस्ट फिगर आउट कि ये पॉइंट क्या रहेगा और फिर उसका वो पॉइंट क्या रहेगा, ऑल ऑफ दैट आई गेट इट, बट सीरियसली हाउ वुड यू फाइंड इसेंट्रिसिटी? जस्ट तो सिर्फ ये पता है कि ये फोकल कॉर्ड है, मतलब ये फोकस से पास हो रहा है, दैट्स ऑल यू नो. ऐसे तो कितने सारे हो गए. या लाइक अच्छा नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं. अपने को ये लेंथ समझ गई ना कि अपने को सब कुछ ही समझ आएगा इनफैक्ट, क्योंकि ये ए ई है और ये ए है, सो दैट विल इनफैक्ट गिव अस एवरीथिंग, राइट. सो दैट मेक्स सेंस. अपने को बस ये लेंथ निकालनी है समहाउ. ओके, वो कैसे करेंगे अपन? So this thing is alpha, and we'll just say कि ये जो चीज़ है that is 2 pi minus beta, right? And now what does that do? You know that thing is A. This thing is also A, and this thing is AE. You don't know ये एंगल क्या है. Actually you know वो एंगल क्या है. It's just 2 pi plus alpha minus beta. ये पूरा वाला एंगल है. So this is going to be pi minus of 2 pi plus alpha minus beta का आधा, right? So from that you will know ये एंगल क्या है. Okay, that's not really what I want to know though. What you really need to know is कि ये लेंथ क्या होगी और ये एंगल क्या होगा. वहाँ से तुम ये चीज़ निकाल सकते हो, राइट. तो इसको इनफैक्ट अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से स्केच करते हैं. ये एक्चुअली अपन पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं आई गेस. या सो दिस थिंग इज ए, दिस थिंग इज ए. दिस कंप्लीट थिंग इज ए ई. जस्ट वांट टू फिगर आउट व्हाट ई इज. या राइट. अपन एरिया भी यूज़ कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली, एंड वी कैन ऑल्सो फिगर आउट कि ये एंगल्स क्या है, राइट. How would you figure out? You know what? Yeah, just use areas. Areas are better to be used. So this is like half a squared e of sine alpha plus sine of 2 pi minus beta, which is just negative sine beta. That's the area of this triangle. और ये चीज़ equal to है half of a squared sine of this angle. So this angle is just 2 pi plus alpha minus beta, so that thing will be alpha minus beta over there, right. Eccentricity is just sine of alpha minus beta upon sine alpha minus sine beta, like that, right. That makes sense, I guess. A squared e वहाँ पे था, and yeah, this should make sense. Okay, eccentricity of the ellipses. Yeah, यही होगा, और क्या हो सकता है. बट इन्होंने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा इसको? अरे यार, ये क्या कर दिया है इसका. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. दिस थिंग कैन बी रिटन एज लाइक 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2,
cosine of alpha minus beta upon 2, and this is like 2 sine of alpha minus beta upon 2, cosine of alpha plus beta upon 2. So ये कैंसिल हो जाता है, एंड वी कैन मे बी लाइक राइट दिस एज 2 कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट. ये चीज़ रिप्लेसमेंट अब नहीं, बट इसका क्या होगा, ये कहाँ से, so instead write this as 2 sine of alpha plus beta upon 2, right? Maybe that will do something better. Okay, and then 2 sine of alpha plus beta upon 2 cosine of alpha plus beta upon 2. तो ये चीज़ हो जाएगी अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये जो पूरी चीज़ है दैट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा. सो ओके, अल्फा माइनस बीटा नहीं चाहिए अपने को, राइट. आई थिंक दैट्स राइट. अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये फॉर श्योर. यहाँ पे प्लस नहीं ना यार, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए अपने को. नहीं, इनफैक्ट या दिस इज राइट बिकॉज a प्लस बी इज अल्फा एंड देन a माइनस बी, दैट थिंग इज इनफैक्ट बीटा, प्लस चाहिए यहाँ पे. सो या दिस इज करेक्ट थिंग, वेरी नाइस. So yeah, this is the thing. The solution set of the inequality is cot inverse of x tan inverse of x plus this guy, oh god, what is this, bigger than 0. Okay, wow, ये सही नहीं हुआ. Let's say tan inverse of x equal to t, and that will mean cot inverse of x is just pi by 2 minus t. Yeah, pi by 2 minus t into t plus 2 minus pi by 2, and cot which is just pi by 2 minus t, right. Okay, plus 3t माइनस 3 इंटू 2 माइनस पाई बाई 2 इज़ बिगर देन 0. यहाँ से अपन ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं. सो पाई बाई 2 माइनस टी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, या इनफैक्ट या दैट्स राइट. और फिर आप जगह 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस टी, एंड यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ. सो प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 प्लस पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 माइनस 2 plus t, very weird. Okay, so like apparently pi by 2 minus t is like useful. कुछ गलत किया क्या मैंने इसमें? ओ यहाँ पे निगेटिव है, सॉरी. वही तो बोलूँ कि ये उससे मैच क्यों नहीं हो रहा है. अगर होता तो बहुत अच्छा होता ना. सो दिस विल बी 3, यहाँ पे जगह माइनस टी एंड ऑल दैट स्टफ. इनफैक्ट इसको माइनस 3 कॉमन लेते हैं यहाँ पे. माइनस 3 एंड दिस विल बी टी प्लस 2 माइनस पाई बाई 2 विच इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस थिंग. या सो दिस विल जस्ट बी टी प्लस 2 माइनस पाई बाई 2, ओके, इंटू पाई बाई 2 माइनस 3 माइनस टी इज़ बिगर देन 0. सो यहाँ से आ जाता है टी प्लस 3 माइनस पाई बाई 2 इंटू टी प्लस 2 माइनस पाई बाई 2 इज़ लेस दैन 0. मतलब कि टी बिलोंग्स टू 2 माइनस पाई बाई 2 कॉमा 3 माइनस पाई बाई 2, राइट. इट्स मोर लाइक tan inverse of x belongs to that. That's bad. Like I don't think कि tan inverse of x की रेंज यहाँ तक एक्सटेंड होती भी है. 2 minus pi by 2 is still okay because, but 3 minus pi by 2, that's, I know, still थोड़ा सा okay, whatever. ये भी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये भी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. इट्स डूएबल इनफैक्ट, राइट, क्योंकि 2 minus 1.5 समथिंग दैट्स लाइक 0.5 समथिंग, सो मतलब 0.4 समथिंग. सो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और 3 माइनस ये चीज़ 3 पाई से कम है. सो समथिंग विच इज़ लेस देन पाई माइनस पाई बाई 2, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी. सो दिस इज़ लाइक एक्स बिलोंग्स टू tan ऑफ दीज पीपल. इट्स लाइक नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ, wait, no, and of 2 minus that, right? Okay, negative tan of
pi by 2 minus 2, which is negative cot of 2 comma negative cot of 3. Okay, cool. Yeah, x belongs to that range. Cot 2 and cot 3 are negative values, I think, so this looks correct. Yeah. राइट, ये निगेटिव होनी चाहिए. सो ये कैसे आखिर? belongs to tan 2, tan 3. None of these यार, इसमें नेगेटिव होना चाहिए. सो how the hell does that make sense? क्या गलत किया मैंने इसमें? सब कुछ सही से तो हो रहा था. T was definitely just tan inverse of x and this should have been working. Don't get it. It's bigger than 0, yes. और मैंने वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लेस देन 0 हो जाना चाहिए. एंड या इट्स लाइक फ्रॉम 2 minus pi by 2 से 3 minus pi by 2. What's the big deal? It's more like negative x belongs to cot 2 to cot 3, or like maybe cot 3 to cot 2. That's better. Right. And yeah, like that's how it is. That's just how it is. Oh no, negative values. Sorry, this makes sense. Yeah, unfortunately यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए थी. सो t बिलोंग्स टू दिस रेंज. इसमें छोटा नंबर ये वाला रहेगा पाई बाई 2 minus 3 कॉमा पाई बाई 2 minus 2. और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के नंबर से, मतलब ये निगेटिव में आ गया. ये वैल्यू नेगेटिव समथिंग है और ये नेगेटिव समथिंग है, और वो समथिंग पाई बाई 2 से छोटा रहेगा. दैट्स फॉर ग्रांटेड. सो दैट मीन्स x belongs to tan of 3 से tan of 2. Okay, cool. सही किया कि नहीं मैंने? सॉरी, cot 3. स्टिल वो cot ही रहेगा क्योंकि पाई बाई 2 minus that thing. So it's cot of 3 से क्या हो रहा है? Cot of 2. So finally B is the correct thing. Next question. If a positive constant t satisfying e power x is bigger than x power t for all positive x. All positive x. Oh, all positive x. Natural log लो दोनों साइड पे. x bigger than t natural log of x. So x upon natural log of x is bigger than t for all positive x. अच्छा ठीक है. x upon natural log x लगता कैसा है वैसे? think about it. इसका डेरिवेटिव कैसा रहेगा? ऊपर का 1 नेचुरल लॉग एक्स माइनस नीचे का डेरिवेटिव विच इज़ 1 अपॉन एक्स, एंड देन फिर ऊपर का 1 अपॉन नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर, राइट? सो दिस इज मोर लाइक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर. सो यू नो कि व्हेन एक्स इज बिगर देन ई ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी, सो ये इंक्रीज हो रहा होगा, राइट? एग्जैक्टली ई पे ये स्मॉलेस्ट रहेगा, ऑफ कोर्स. That makes sense. More like e power 1 upon t bigger than x power 1 upon x. और अपन ये चीज़ ऑलरेडी 1000 बार देख चुके कि इसका मैक्सिमम e पे रहता है और फिर ये डिक्लाइन होना शुरू होता है. और या रियली that's how it is. So we know कि इस केस में भी इस e पे इसका ई पे इसका मिनिमम रहेगा, राइट? क्योंकि अभी ये पॉजिटिव है, मतलब जब x इज बिगर दैन ई दिस थिंग इज लाइक पॉजिटिव, सो इट्स इंक्रीजिंग, और x इज लेस दैन ई पे ये डिक्रीज हो रहा है, सो ई पे मिनिमम वैल्यू रहेगी. व्हेन वी पुट ई इन देयर ये 1 हो जाता है, सो ई इज बिगर दैन टी. कोई भी ई से छोटी वैल्यू रही काम करेगा. उप्स मैंने उल्टा लिख दिया. टी इज लेस दैन ई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? दिस शुड बी करेक्ट. सो नेक्स्ट इज a question paper on mathematics consists of 12 questions divided into 3 parts A, B, C,
ईच कंटेनिंग 4 क्वेश्चंस. ओके, टोटल 12 क्वेश्चन है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक में 4 क्वेश्चन है. इन हाउ मैनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर 5 क्वेश्चंस selecting at least one from each part. ओके 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 ओके, ये उस टाइप का हो गया स्टार बार थ्योरम जैसा, राइट, एक्सेप्ट कि इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा अलग है. सो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, तो वो तो तुम कर दो, मतलब 3 जो रहेंगे वो पहले 3 चूज़ करने के लिए तुम्हारे पास में रहेगा 4 क्वेश्चन, तो 4 × 4 × 4. पहले 3 तुम्हें हर सेक्शन से चुनने हैं, उसके लिए तुम्हारे पास में इतने वेज रहेंगे, टाइम्स कि अब जो बचे हुए हैं वो तुम एक सेक्शन से चुन भी सकते हो, नहीं भी चुन सकते हो, सो वो ऑप्शनल रहेंगे. तो हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास में 3 सेक्शन है बेसिकली. सो अब उल्टा हो जाएगा. सो जस्ट हैव इनटू हर एक में 3 है, सो 3 की पावर कितने बचे हुए क्वेश्चन से 3 हो चुके हैं, सो अपने को 2 ही बचे, एटलीस्ट 1 फ्रॉम 5 questions. Yes. Okay, so this is 64 into 3 square, so 64 into 9, which is, so 4 9 36, 3 54 57 576, which is not there, of course. क्यों, इसमें क्या गलत हुआ है? क्वेश्चन 4 इनिशियली है, फिर बाद में सिर्फ 3 चॉइसेस नहीं है यार, वो सेक्शंस थोड़ी ना, सिर्फ उनके अंदर भी तो क्वेश्चंस रहते हैं, सो ये 3 चॉइसेस नहीं है. अब कैसा है कि अब तुम्हारे पास में, या दैट मेक सेंस, सो तुमने ये 4 तो कर दिए, राइट. ओ नो ओ नो 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 नो. ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करती अनफॉर्चुनेटली, फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फिर अपने को इसको इंक्लूजन से करना पड़ेगा. अगर इसमें ऑर्डर मैटर करती होती तो अपन ऐसे कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर डजंट मैटर. शिट. ओके, इंक्लूजन एक्सक्लूजन. सो टोटल क्वेश्चन कितने, 12C 5 माइनस, जब तुम एक सेक्शन में से कुछ भी नहीं ले रहे हो, तुम्हारे से सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे, सो 8C 5, या ऐसे 3 हो जाएंगे, क्योंकि तुम ऐसे 3 टाइप से कर सकते हो, 3 into दैट. ओके, फिर प्लस, तो अब मुझे दो एरर्स एक साथ कमिट करने हैं, तो मैं ए से भी एक भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ और बी से भी एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे सारे सी से लेने, दैट विल बी 4C. हो ही नहीं सकता वो तो, सो दैट इट बी फाइन. दिस इज़ वॉट इट इज़. ओके, कूल. सो या, this is the number of ways basically. So 12 into 11 into 10 into 9 into 8 upon 5 into 4 into 3 into 2. So ये हो जाएगा 2 and this is 2 as well, और ये पूरा 4 क्लास में कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 8 अभी भी रिमेनिंग है, 3 8 11 11 into 3 into 8 minus, so 8C5 is just 8C3 basically, so 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 cancels, so minus 3 into 8 into 7, so 3 into 8 into 24 common ले लो, 24 into 11 minus 7 which is just 4, so it should be 6 1 carried on. ये बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन या लाइक ये कैसे हो सकता है, तो बहुत ही छोटा सा नंबर है. (8C5) we can write this as 8C3 for sure. Yeah, like why is this so small? (12) में से मैंने 5 चुने, that's no problem. Come on, 11 into 8 into 3, yeah, minus 3 into 8 into 7. Oh, come on, 3 into 8 into 4, that's a very small thing for some reason. 8 and 16 is just 96. क्या गलत हो रहा है मेरा?
total number of ways to do this thing 12c5, right? 5 क्वेश्चंस उसे आंसर करने। ओह टाइम्स नहीं वेट, अच्छा ठीक है, उसमें ऑप्शंस वगैरह थोड़ी नहीं दिए। सो 12c5 या ऑफ कोर्स। LC5 तरह से तुम क्वेश्चंस चूज़ कर सकते हो, माइनस जो तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए, और उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं बनता जिसमें तुम दोनों साथ में ना कर रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट? क्योंकि 4C5 एग्जिस्ट नहीं करता है। कम ऑन यार, सोचो कहाँ पे गलत जा रहा हूँ मैं? दिस शुड बी करेक्ट, राइट? Falsify is this thing, right? So ये 2 से मारा और वो 4 से गया, ऑफ कोर्स। 12c5 is like 8 into 3 24 into 11 is 254, उतना बड़ा है ये। 254 माइनस ये चीज़ 3 into 8 into 7, एट C5 is very much like 8C3. Yeah, that's just 8 into 76 upon 3 into 2. Come on. It's just 8 into 7, but then that times 3, क्योंकि ऐसे 3 तरह से तुम कर सकते हो। So I don't get it यार, प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्यों ये वैल्यू सही नहीं है? तो लाइक दिस इज जस्ट 61 कैरेट ऑन इज लाइक 96 तरह से ही हो सकता है ऐसा। आई डोंट नो, मैं सिर्फ 96 बोल के आगे बढ़ता हूँ। ओके, इफ साइन इनवर्स ऑफ दिस गाय प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस गाय प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस गाय प्लस cot इनवर्स ऑफ दिस गाय इक्वल टू a pi by b, where a and b are in the lowest form, then a plus b equals, ओके ये सेम टाइप के क्वेश्चंस कितने पूछने वाले हैं? 33 pi by 7, that's like 35 pi would be 5 pi, so it's like 5 pi minus, yeah, 35 minus something like that. 5 pi थोड़ा सा गंदा नंबर है। Let's talk about 4 pi, so 4 pi plus 5 pi by 7, right? Which is like, okay fine, just pi minus 2 pi by 7, so this is more like sine inverse of sine inverse of sine of 2 pi by 7, which would be 2 pi by 7. ओके तो पहला 2 pi by 7 है, दूसरा क्या है? कोसाइन इनवर्स ऑफ cosine of 46 pi by 7, so it's like 49 pi minus 3 pi by 7, but 49 pi is 7 pi, so it's 7 pi minus 3 pi by 7 का cosine. 7 pi would be, it's an odd multiple of pi of course, so okay, and then minus 3 pi by 7, which is still less than pi by 2 I believe. तो इसलिए ऑब्ट्यूज रहेगा। सो ठीक है फिर, इट्स ओके, राइट? इट्स ओके, मतलब इसको मुझे लिखना चाहिए 6 pi प्लस, ओके 6 pi plus 4 pi by 7 I think, because 42 plus 4 is 46, right? And 4 pi by 7 is just an obtuse angle, चल जाएगा। सो ये वाली चीज़ रियली जस्ट 4 pi by 7 है। ओके फिर अगला है tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव tan 13 pi by 8। नेगेटिव tan यानी कि लाइक नेगेटिव 13 pi by 8 की बात करो इनफैक्ट। सो यू कैन राइट दिस एज 16, ओके नेगेटिव 16 प्लस 3, राइट? सो नेगेटिव 2 pi प्लस 3 pi by 8 आई थिंक। ओके तो ये तो गया, एंड 3 pi by 8 इज
less than pi by 2, I believe. So this is 3 pi by 8. Okay, and then cot inverse of cot this value. Once again, you can write this as negative 16 is like negative 2 pi and then negative 3 pi by 8. Okay, so negative 3 pi by 8 cot in, okay, cool. Negative 3 pi by 8 का cot, that is just some negative value. Oh shit, नहीं ये ओके है, ये ओके है कम्प्लीटली, बिकॉज लाइक 2 पाई नेगेटिव 2 पाई प्लस वो तो एक्यूट ही था, सो ये कम्प्लीटली करेक्ट था. ओके, सो जस्ट 2 ऐड कर दो इसमें, सो जस्ट कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ व्हाट, नेगेटिव 3 पाई बाई 8. सो हाँ, वो चीज़ नेगेटिव है, एंड इट इज़ एग्जैक्टली दैट्स लाइक इट्स जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट. यू नो कि 3, कैसे बताऊँ मैं, कॉट की वैल्यू 0 to पाई जाती है. दिस वुड बी लाइक पाई माइनस 3 पाई बाई 8. दैट विल गिव अस दिस वैल्यू, राइट? दैट मेक्स सेंस. सो ये चीज़ ओके, सो दिस इज पाई माइनस 3 पाई बाई 8. ओके, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ये गया, एंड दिस थिंग इज जस्ट 6 पाई बाई 7. दिस थिंग इज 6 पाई बाई 7, और फिर पाई प्लस 6 पाई बाई 7, दैट इज 13 पाई बाई 7. So 13 plus 7, that should be 20. Next question. Okay, consider the cubic x cube minus x squared plus 3x plus 4 equal to 0, where a, b, c are its roots, and let w be tan inverse of a plus tan inverse of b plus tan inverse of c. If the absolute value of secant omega, what? Okay, ये cubic a, b, c are its root. यार, w equal to tan inverse of a, tan inverse of b, tan inverse of c. तो okay, this is bad. The absolute value of secant omega. Okay, now I'm getting what you are trying to do. Fine. So अपने को tan omega पहले ढूंढना पड़ेगा. Like tan omega will just be summation of a minus abc upon क्या था, 1 माइनस, या 1 माइनस में था ना, यस, 1 माइनस ऑफ समेशन ऑफ ए बी. सो समेशन ऑफ ए, दैट थिंग इज नेगेटिव 1 का नेगेटिव जस्ट 1, एंड देन ए बी सी, दैट वुड बी नेगेटिव 4, आई गेस. या नेगेटिव 4. ओके, सो दैट मीन्स ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा. Yeah, upon 1 minus summation of AB. Summation of AB is positive 3, so it's just 1 minus 3. Yeah, so it's just 5 upon minus 2, so it's negative 5 by 2. Tan omega is negative 5 by 2. Okay, then secant omega क्या है? Then what is secant omega? अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढ लेंगे बेसिकली. सो ये 5 है, ये 2 है, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 विच इज़ 29. सो secant omega इज hypotenuse which is square root of 29 upon 2, right? So n is 2, यहाँ पे ओमेगा रहेगा, and m is 29, then m plus n, that is 31. Okay, next question, Mr. A and Mr. B. Okay, each have a bag that contains one ball, each of the colors blue, green, orange, red, blue, green, orange, red, violet. A randomly selects one ball from his bag and puts it into B's bag. Okay, दोनों के पास में ऐसे बैग्स हैं जिनमें दोनों बैग्स में ये इस टाइप का अरेंजमेंट है. Okay, fine. A randomly selects one bag from his bag, one ball from his bag, and puts it into B's bag. B then randomly selects one ball from his bag
and puts it into A's bag. Fine. The probability that after this process the content of the two bags are the same is right. तो बेसिकली जो मेजर इवेंट है वो बी के बॉल निकालने पे ही है, राइट, क्योंकि ए जो भी करे उससे प्रोबेबिलिटी का मतलब या लाइक कैसे इसको बताऊँ मैं। फाइन, अपने को सिर्फ बी का देखना है कि तुमने ऑलरेडी ए वाला इवेंट कर दिया, अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो लाइक तुम्हारे पास में 2 ब्लू बॉल्स आ गए फॉर एग्जांपल, और तुम्हारे पास में बाकी वही सब है। सो 1 2 3 4 5 लाइक इट शुड बी 2/7, सॉरी 2/6, बिकॉज अब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 6 बॉल्स हो जाएंगे। सो 1/3 शुड बी द प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लू बॉल को चुनता है, और वही प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस एग्जैक्ट जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, राइट। और बेसिकली सारे जो केसेस हैं उन सब में यही प्रोबेबिलिटी लगेगी, तो उनका एडिशन 1/3 ही होगा, मतलब उनकी एवरेज लाइक मिला के जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट, इफ द फंक्शन ओके इज ऑन टू then the set of values of a in 0 to 2 pi. Okay, so minimum values की नेगेटिव इन्फिनिटी है और मैक्सिमम 0 है। Okay, why, like this is always negative, basically that's what you are saying. तो cot a into x square plus 2 square root of sin a constants है वो तो yeah, that's very nice. So ये हमेशा wait, what? Okay, this is an onto function, but it's going from real to, so like cot a should be negative first of all. Oops, cot a is less than 0 for sure, and you should also have कि जो maximum value है just negative t upon 4a, so negative of t is like b squared, which is 4 sin and yeah, sin a should be bigger than 0 at the same time, क्योंकि ये डिफाइंड होना चाहिए। So b squared, which is 4 sin a minus 4ac, so minus 2 tan a cot a तो 1 हो जाएंगे, and -2 in that case upon negative d upon 4a, so 4 into cot a. This should be 0, I guess, right? Yeah, this should be 0. बट ये 0 राउंड ब्रैकेट में दिया है, सो आई डोंट गेट इट कि कैसे ये कभी 0 को टच नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये समथिंग्स नॉट करेक्ट अबाउट दिस, मतलब वो अप्रोचिंग 0 होगा, राइट। ओके, I'll just try to solve this thing. So that would give us sin a equal to 1/2, राइट। ये सॉल्व करने पे एज सच अपने को सिर्फ इतना ही मिलेगा, बट एक दूसरा तरीका भी है वेयर व्हाट यू डू इज़ कि इस चीज़ को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओ, मतलब sin a equal to 0, इफ sin a equal to 0 ये चला जाएगा, एंड शिट ये सही नहीं होगा, सो नहीं, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो sin a equal to 1/2, so that this happens, and yeah, फिर in that case ये obviously bigger than 0 है, so yeah, cool. sin a is 1/2, cot a is less than 0, मतलब कि कोसाइन नेगेटिव होना चाहिए, so cosine a is negative square root 3/2. Okay, then the set of values of a in 0 to 2 pi. और क्या हो सकता है इसमें? I don't think कुछ और हो सकता है। negative t upon 4a, that is 0, that's the only way, क्योंकि yeah, of course, और हो ही क्या सकता है?
वैल्यूज ऑफ ए इन 0 to 2 पाई, ए की वैल्यू है जिसमें ये चीज़ होती है बेसिकली. सो तुमने दो वैल्यूज़ कैसे इसमें रखी? हाउ डज दिस मेक सेंस? cot A should be negative. Okay. That it almost touches the x-axis and then goes down. ये तो होना ही चाहिए कि cot A नेगेटिव हो. Whatever. Then that means A is really just pi minus 30 degree, and pi minus 5 by 6, which is just 5 pi by 6. Right, that's all it is. A is 5 pi by 6. और I don't think कोई और वैल्यूज काम करेगी. पाई, does pi work? साइन को ज़ीरो पुट करने से ये चीज़ इन्फिनिटी वगैरह हो जाती है. एंड आई मीन लाइक पाई पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी टाइम्स ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी. ओके, सो दैट टाइम्स एक्स स्क्वायर. या लाइक ओके, इनफैक्ट येस इट डज अप्रोच. सो या, यू नो व्हाट, येस दैट्स राइट. 5 pi by 6 एंड पाई. 5 pi by 6 पे साइन ए इक्वल टू 1/2 होता है, एंड cot A just becomes negative square root 3, so it's like negative square root 3 x squared plus x plus 1/2 of tan, which is just negative 1 upon square root 3, so it's like negative 1 upon 2 square root 3. ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? बी स्क्वायर इट्स लाइक 1 minus 4ac, so like plus okay minus 2 upon 4a, नहीं d upon minus 4a, it's like 4 square root 3, which is negative 1 upon 4 square root 3. हाँ, how could that be? ये कैसे हो गया? Square root 3 होना चाहिए था. So how did this happen? b squared minus 4ac upon negative 4a, and that should have been 0, और ये 0 नहीं है for some reason. क्यों? ये तो 0 होना चाहिए ना? या लाइक oops, ये क्या हो गया? साइन लाइक what is the problem? oh sorry, वो स्क्वायर रूट ऑफ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग. सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3, और फिर वो काम करेगा लाइक बी स्क्वायर 2 minus 4ac, सो प्लस 2 नहीं minus 2 equal to 0. yes, right. so this should work, like I think. okay, next question. If this is theta, then the maximum value of cosine inverse of x upon a minus sine inverse of, what is this thing really? Maybe xy sine theta. It's like I don't know. कैसे बताओ ये क्या चीज़ है? लाइक दो वेक्टर्स है जिनकी मैग्नीट्यूड्स बी एक्स और ए वाई है, उनके बीच में एंगल थीटा है. थीटा भी नहीं, पाई/2 माइनस थीटा रखना पड़ेगा. राइट, समथिंग लाइक दैट. okay, equal to that thing. so cosine inverse of x upon a equal to that. क्या इसका क्या? okay, just multiply cosine on both sides. so x upon a equal to sine of pi/2 minus, नहीं, it's like x upon a equal to cosine of sine inverse of y upon b, which would be like something square root of 1 minus y upon b का square, something like that. this is equal to theta. This like theta over there. okay, this is weird. fine, we'll just do this thing. Okay, do sine on both sides. so ये sine a, so sine of cosine inverse of x upon a, cosine b, so sine a cosine b is
cosine of that guy, what like q sin inverse of y upon b. okay, फिर माइनस साइन b, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन b. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y अपॉन b, देन इसको x अपॉन a, राइट. सो इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y अपॉन b का स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी. दिस गाय साइन थीटा, right, multiply by AB. So that will give us B square root of A square minus X square, and then A square root of B square minus Y square, right, minus XY equal to AB sin theta. Cool. That goes over there plus XY और फिर इसका स्क्वायर कर डालो. So AB into, right, and then it's like A square minus X square into B square minus Y square, something like that. A squared B squared sin square theta. What the hell, ये कैसे हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर क्यू, आई डोंट गेट इट. यहाँ पे तो स्क्वायर सीखे, सो अचानक से यहाँ पे कैसे हो गया ये. दिस इज बैड. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वगैरह नहीं है ना. हाउ वुड दिस इवन बी. अच्छा, मुझे वैसा करना पड़ेगा, राइट. दिस विल बी लाइक कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन बी इक्वल टू, बट स्टिल वो होगा ही वैसा. मैं कैसे भी ट्राई करूँ दैट विल हैपन कि मुझे वो स्क्वायर रूट वाली एंटिटीज मिलेगी, तो उसको मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ फिर. आई डोंट नो, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट्स जस्ट बैड. somehow उसको a प्लस बी जैसे लिखो. व्हाट इज दिस. Think about it in terms of angles, maybe that will do it. So yeah, x upon a, उसका कोसाइन इनवर्स कुछ तो भी, हाँ, that's equal to थीटा. एक इलिप्स की बात कर सकते हैं अपन, ए और बी. सो यू नो लाइक इसका पैरामीटराइजेशन कैसा होता है, एक्स मतलब इसका पैरामीटराइजेशन होता है ए कोसाइन थीटा कॉमा या ऑल दैट स्टफ. सो एक पहला पॉइंट है जिसका एंगल कुछ तो भी है, लेट्स से अल्फ़ा, और फिर दूसरा एक पॉइंट है जिसका एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा है, समथिंग लाइक दैट, राइट. इसमें जो y वैल्यू है दैट इज़ y, एंड दिस इज़ लाइक y अपॉन b, अगर ये पूरा सर्कल है तो यूनिट सर्कल बेसिकली. एंड दिस गाय हैज़ x वैल्यू एज x अपॉन a. ओके, कूल. हाँ, what even is this thing? Equal to theta, and the maximum value of this guy equals, really, why? You know what, whatever, just उसको स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, you know, yeah, स्क्वायर दिस थिंग. तो कहाँ पे गए हम, हाँ, इसको स्क्वायर कर रहे थे. सो ये वाली साइड का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट. ए बी से मल्टीप्लाई किया था हमने, सो दिस शुड बी लाइक दैट. या व्हाट could be the problem. Okay, whatever. And then you got 2abxy sin theta. Okay, और फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी ab इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसमें क्यूब्स वगैरह ये कुछ के कुछ वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है. जस्ट b इंटू दैट एंड देन ये ए और बी तो पूरे पूरे चले गए ना. यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है इसको, दिस ए बी इज़ नॉट देयर.
राइट, वही नहीं है बस वहाँ पे, और फिर मैंने स्क्वायर किया है. दिस इज लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ऑल दैट. तो यहाँ से ये कटेगा एंड दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा, राइट, यहाँ पे आके, और ये इक्वल टू ये चीज़ है पूरी. सो ये गया एंड दैट गोज ओवर दैट, लाइक बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a बी एक्स वाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा. सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है. सो या दैट्स व्हेन थीटा इज़ लाइक पाई बाय 2. सो ये चीज़ 1 हो जाती है एंड स्टफ. सो या इट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर. कूल, दैट मेक्स सेंस. ओके fine, and then what? Let g of x equal to ax plus b. You know what, no, I think I'm gonna stop here. So I'll see you guys in the next video.